वेलकम बैक गाइस, दिस ब्लैक कमांडो हियर। तो आज अपने खेलने वाले फिर से एमनीशिया द डार्क डिसेंट। तो कंटिन्यू करते हैं। अपने कई बार देखा था कि उसको मारने का भी लूसीफर को, पर वो नहीं पता कि मैं उसकी लैब देख ली थी। इधर एक्सप्लोर कर लिया था अपने पूरा। इधर रुक गए थे अपने, इधर नीचे देख लिया था। अब एक की जगह रही है ऊपर देखने की। देखते क्या है ऊपर, क्या है इधर। डोंट बच। इस साइड कुछ है क्या? काश ऐसा खुला होता है, बाहर चले जाते डायरेक्ट। कोई है? कैसे बात है भाई? देख के क्या है ये? आर्काइव्स। Traveling to Amnesia to pay a visit to avoid the sense of guilt connected with the neglect of family. Okay. Rare books. Library. Okay, यानी कि rare books. तो letter है इधर एक. 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. ओके, इसमें ये था कि ये लोग अफ्रीका में कहीं पे एक्सप्लोरेशन करने गए हुए थे। प्रोफेसर है, डेनियल की नोट थी, कोई ये लोग टूब और कुछ ढूंढ रहे हैं। वो कुछ है ये क्या है? ओके, अच्छा इधर साइड और है कौन से क्रीचर है यार? देखने पड़े। ये कौन सा रूम है? कैटलॉग्स। अंधेरा है, किधर है? एक और लेटर इधर। I hereby offer my full attention and service to Alexander, Baron of Barenburg. Baron? कोई पोस्ट लगती है, मतलब कोई पोस्ट होगी उसकी। This contract will range for a total of 3 years when my freedom shall return to me. In addition, Alexander Baron of Barenburg is to recommend my service at the Russian Royal Court and within the sanctum of the Order of the Black Eagle. May no man drink the sea, William House of Courage. Oh, अच्छा, ब्रेक देने के लिए रेडी होंगे उसकी फ्रीडम 3 साल के लिए। इंटरेस्टिंग। कुछ साउंड गजब है, इंटरेस्टिंग अभी तक हुआ है पर इतना भी नहीं। अभी तक क्या स्टोरी है? कुछ 17th of May, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful.
They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. Oh, The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. तो ये अंदर गए, इन्होंने जो जगह डिस्कवर करी थी, वहाँ पे अंदर जाते जाते बहुत सारी स्ट्रेंज चीजें दिखी इसको, जो बहुत पुरानी थी, इन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उससे, और वहाँ पे लास्ट में ये ट्रैप हो जाता है। अब देखते हैं आगे किधर है लेटर। एक और ओके, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। इधर भी ओके करूँ मैं। ओके लेट दिस अप। That was scary. Randomly मैं देख रहा हूँ ऐसा कुछ सीक्रेट हो यहाँ पे, नहीं देखा ना। वॉन्ट टॉक्स नहीं देखा, इधर देखा। ओके ना देख नहीं रहा है कुछ। लेट कर लेट कर लेट कर। वेट, अपने को वो कहाँ से लेते थे? अरे यार वो कहाँ से था अपने को? रुक जाओ, कहाँ पे है कंट्रोल्स? कहाँ पे गए वे? अरे अपने को लैंटिक कैसे लगाते थे? भूल गया। आई से था, किसे था? फिर कौन सा था यार? JDL ना। अरे किधर है यार? हाँ F। ओके फाइनली। चल अपने को सॉइल पड़ा था तो क्यों नहीं यूज करते? क्या ये वो होता? ये ऐसा है। ये रुक, कुछ और नहीं दिख रहा। लोकल हिस्ट्री। ओह लॉक्ड है। ओके तो कहीं पे की मिलनी चाहिए थी। ये रूम में कुछ होगा इतना बड़ा? यार इतनी बड़ी बिल्डिंग भी है। कौन से टाइम की ये सारी बिल्डिंग? ये किसकी आवाज थी? ओ भाई साहब। अच्छा ओके 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 ओके, तो कौन भी है? ये तो ऊपर से आ रहा है। भाई कुछ आने वाला है ऐसा लग रहा है। कुछ तो आने वाला है अब। अच्छा ये अपना चला, ठीक है कुछ नहीं। लाइट है इधर बहुत। क्या है?
structure of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the walls. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, and there. Let's get the servants working on it. तो ये लोग यहाँ पे कुछ ढूंढने आए थे लगता है। इंटरेस्टिंग। तो ये यहाँ पे रह नहीं रहा लगता है। तुम लोगों को पता था इन लोगों के शैडोज मतलब क्या था यार ये? नहीं भाई इसका किंगडम रशिया क्या है तो तीसरा लेटर अभी तक नहीं मिला अपने को। मैंने क्या कुछ पीछे मिस किया देखना पड़ेगा। भाई ये नहीं रहा। अरे लेटर ही तो उठाया मैंने और क्या किया था? What? 17th May, 1839. After Okay. pounding the Third letter, unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. कौन सा relic था वो? Oh, something interesting. Okay. मुझे तो लग रहा है पीछे में कुछ मिस। ये बंद हो गया? Shit. अरे यार नहीं ना। छोड़ो वैसे भी नहीं आने का। कौन सा रूम है? Maps. राइट करने दो। ये होल कहीं का है भाई इधर? ब्रेक तो कर दिया। Fragile but not breakable wire. Okay, ऐसा कुछ हो गया। You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. क्या था ये? इसके वास्ते ये? देखा बोला ना ऐसा कहीं पे होगा ये रहा। चलो ये तो खुल गया है। फिर वो ये क्या खुलता है? एक और है यहाँ पे। वो निकालने दो मुझे। ये निकालने दो। क्या है इसमें? एक और है ये। मुख से तोड़ सकते हो। तोड़ सकते हैं। Big brain. Local folklore. Ulster and Birmingham Castle, 1801. Another region rich with lore is Alstadt, deep within the East Russian woods. For centuries, there have been stories surrounding the hamlet and its neighbor,
Castle Brandenburg. The quiet forest-clad mountains dressed with scattered lakes is as picturesque as can be, albeit the area is haunted by the dark. Ask any local and you will hear proof of the widespread superstition. Any traveler should indulge themselves in such conversation since it will certainly serve as exciting entertainment. All of them have their own twist on the tales, but there are some motifs that keep reappearing. ओके ये और कोई पेज था क्या नहीं ये नहीं चाहिए मैं विंडोज नहीं डायरीज नहीं नोट्स लोकल फोल्डर हाँ The Gatherers. This story reaches all the way back to the time of the 30 Years' War. It is said that soldiers who abandoned their duty got lost in the cold dark woods and were forever damned to roam the grounds. Their bodies, brought by their tainted soul, have left this figure empty of essence. Many have cited them over the years and described them as horrid revenants. They move silently through the woods, shying away from any beholder. They are called gatherers, as they seem to follow some ambition to steal living creatures. It is prey. It is the prey which can be heard struggling inside damp burlap sacks dragged behind them, which reveal their presence. What dark scheme do they follow? Interesting. तो ये सारे stories हैं कि a visit under Heinrich Cornelius Agrippa, the well-known erudite, erudite, पता नहीं क्या है ये, visited Ostend at the start of the 16th century. He resided in the local inn for a fortnight as he looked for remnants of kingdom past. During his stay, all the prominent members of society paid notice, and he is mentioned in many records of the time. Okay, one day he went to investigate a burrow in the northwestern glades, only to never be seen again. Oh, Heinrich is known to have passed away in Grenoble some 10 years later. Oh, he dismissed the notion of ever visiting Ostend. Okay, now there's the cha, which makes you wonder what really happened, huh? What what was this mysterious man who visited the sleepy hamlet in the woods and what happened to him? The immortal Baron, the Baron of Brandenburg, lives a reclusive life with his family at his castle nearby Alstead. And like most those of noble birth, rumors are inherited alongside with the title. Researching the history reveals little before the castle was consumed by fire in the late 16th century. Acha. It was rebuilt by Alexander, Acha, a nobleman from Rhinelands claiming the role as a protector of the Russian state. Alexander had the reason to flourish and remain popular throughout the presumed lifetime. The family has always been secretive when it comes to lineage and heritage. Therefore, the birth and death of Alexander and his offspring has never been fully recorded. This has fed the idea that the baron is in fact the one and the same who came from the west over 300 years ago. Oh, lived through the time of occupation and joined the coveted order of the Black Eagle along with the great leader of this country. अच्छा ये स्टोरी बहुत स्कैरी है यार ये चलो फुट गया ये कुछ ऐसा काम ये कोई कंपनी है इधर कुछ और है क्या और कुछ ये एक और है और कुछ है इधर anything else nah wait हाँ that must be a way देखिए तो खुला ही है वो कहाँ गया दूसरा एक और बुक था ना इधर हाँ एक और है एक और होना चाहिए किधर है अरे यार लाइट ये चालू करो गिरा अरे भाई हो जा होगा फाइनली ओके इधर क्या है
अलेक्जेंडर, अच्छा ये की अपने को वाइंस, ये हाँ दैट्स क्या मैन, वाइन सेलर की मिली, अच्छा एक और लेटर है regarding closing of the wine cellar. Wilhelm and his fool have endangered my research long enough with their absent-minded handling of the human waste. The sheriff is keeping an watchful eye on the forest and is killing my trusty servants. Oh, Alexander तो चोर कर रहा था. It's just a matter of time until they follow up the trail of Burrenberg. I need to lock Wilhelm and his men up to avoid further investigation from the public. The wine cellar will therefore be sealed off until the matter has been handled. Either the kings will leave or they will starve. Whatever comes first, they can rot for all I care. Maybe I will feed them some wine. It could, in a sense, solve both of my problems. Okay. उफ, अलेक्जेंडर क्या किया तूने कुछ तो गलत? कि इधर कुछ है क्या? इधर कुछ है? नहीं, इधर कुछ नहीं है. ओके ये अपना खुल गया. व्हाट? ओके हाँ, ये वो वाला डोर है जो लॉक हो गया था ना. हाँ 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 याद है. अब अपने को शायद वापस आने का है ना. लेट्स सी इधर कुछ है. इधर देख लेते हैं ना, शायद पहले अपने देख लेते हैं वापस करता है. यार ये तो एकदम सैनिटी लूज कर रहा है. मत लूज करना, भी आ जाएगा तो लाइट में. देख ये रे लाइट. ये कौन सा रूम है? स्टडी. व्हाट? ये पहले अच्छा इसकी की चाहिए थी ना अपने को स्टडी की. कहाँ पे है वो की यार? मेरे को तो नहीं मिला कहीं पे भी एक भी. तो बहुत टाइम हो गया है कि ढूंढते हुए अभी तक की मिली नहीं है. तो अब क्या करें? कुछ नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं अपने उसको. तो ये एपिसोड तो यहाँ तक ही रखता है. मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया सब जगह और थोड़ा स्टोरी पता चल गई मेरे को, वो इम्पोर्टेंट है. तो अच्छा चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. चल रहा है. दिस इज ब्लैक कमांडो साइनिंग ऑफ. बाय बाय.